Hello students, we are doing the 14th chapter, that is respiration in plants. Dear students, till now we have discussed the various steps of aerobic respiration like glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle and electron transport chain. And today we will calculate how many molecules of ATP they are formed from one molecule of glucose upon its oxidation. So today we will be doing the topic balance sheet of glucose, second RQ, that is respiratory question, and third topic is amphibolic pathway. So students, let's start it. Okay students, let us start the topic respiration balance sheet and RQ, that is respiratory quotient. In respiration balance sheet, we will calculate how many total molecules of ATP they are formed from one molecule of glucose oxidized in the presence of oxygen. Now students, we all know that aerobic respiration, that is having many steps like glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. And in aerobic respiration, one molecule of glucose, that is C6H12O6, that is oxidized in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. So today we will be calculating the total number of ATP molecules which will be formed from one molecule of glucose on its oxidation. Now students, respiration or aerobic respiration is having many steps if the respiratory substrate is glucose, and we have discussed all these steps in detail. In the first step glycolysis में students हमने study किया कि glucose जो है that was splitted into two molecules of pyruvate. In glycolysis there was direct formation of ATP. Two molecules ATP के directly formed हुए थे by the process substrate level phosphorylation. Besides ATP, glycolysis में दो molecules NADH2 के formed हुए. Now the pyruvate it enters into the mitochondria and it undergoes oxidative decarboxylation and then it entered into the Krebs cycle. During oxidative decarboxylation, two molecules of NADH2 they were formed. And when the acetyl coenzyme A, which is formed after oxidative decarboxylation, it enters into the Krebs cycle, then it formed 6 molecules of NADH2 and 2 molecules of FADH2. In Krebs cycle, besides 6 molecules of NADH2 and 2 molecules of FADH2, 2 molecules of ATP they were formed directly again by the process substrate level phosphorylation. Now in aerobic respiration, a number of reducing powers they were formed like NADH2 and FADH2. And these reducing powers NADH2 and FADH2 ultimately they transfer their electrons to oxygen, but they cannot directly transfer their electrons to oxygen, so they transfer their electrons to a series of electron carriers which are present on the inner mitochondrial membrane. And the transfer of electron, that is from low redox potential to high redox potential. So it is a downhill journey, and during this downhill journey a number of energy that is released, and this energy it helps in the formation of what? It helps in the formation of ATP molecules. So now the energy it will be formed from NADH2 and FADH2 by the process of oxidative phosphorylation, which I have discussed in detail in my previous lecture. So students, थोड़ा सा recall करते हैं अपना previous lecture. There we discussed on electron transport chain and oxidative phosphorylation. Now students, NADH2 and FADH2 अपने electrons जो हैं वो transfer कर रहे हैं to the series of electron carriers. And when NADH2 it transfers its electrons to the first complex of ATC, then 3 pairs of protons they are released towards the intermembrane space. And these 3 pairs of protons they will try to enter inside the mitochondria, but they will enter inside through the ATPase.
and then when they will enter through ATPase, they will result into the formation of ATP molecules. Now student, one pair of proton, that is 2H positive, it forms one molecule of ATP. Because NADH2, one NADH2 molecule, that is releasing 3 pairs of protons towards the intermembrane space, so it will form 3 molecules of ATP. Now let us look at this FADH2. When FADH2, it transfers its electrons to the electron carriers present on ETC, then it releases 2 pairs of protons towards the intermembrane space. So one pair of proton, it forms one molecule of ATP. So we can say that FADH2 molecule, it helps in the formation of 2 ATP molecules, because एक FADH2 का molecule जो है वो 2 pairs जो है protons के या 4 protons जो हैं, that is releasing towards the outer side. ठीक है, सो इस तरीके से वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से दैट इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड इन Krebs cycle, the NADH2 which is formed, it is releasing 3 pairs of protons towards the outer side, so it will help in the formation of 3 ATP molecules. It means एक NADH2 का मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म्ड हुआ है इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड इन Krebs cycle. स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड Krebs cycle ओनली. इन दोनों स्टेप्स में जो NADH2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, दे विल फॉर्म 3 ATP मॉलिक्यूल्स, एंड द FADH2 मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड in the Krebs cycle, it will form how many ATP molecules? It will form 2 molecules of ATP. Now students, what about the NADH or NADH2 which was formed from glycolysis? अब glycolysis step जो है, that is taking place in the cytoplasm, and the NADH which is formed in glycolysis, it cannot cross the mitochondrial membrane. तो स्टूडेंट्स, ये जो NADH2 फॉर्म्ड हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर करेगा टू दी ETC, बट थ्रू 2 शटल सिस्टम. 2 शटल सिस्टम्स हैं. 2 शटल सिस्टम्स के थ्रू ये जो NADH2 फॉर्म्ड हुआ है ग्लाइकोलिसिस में, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू ETC. पहला शटल सिस्टम है स्टूडेंट्स ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल सिस्टम, जो कि लीस्ट एफिशिएंट है एंड विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स एंड ब्रेन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP molecules. So 2 shuttle systems हैं which are present, and through these 2 shuttle systems the NADH2 which is formed from glycolysis, that is transferring its electrons to ETC. पहला शटल सिस्टम जो है वो लीस्ट एफिशिएंट है, जिसको हम ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल सिस्टम कहते हैं. In glycerol phosphate shuttle system, 1 NADH2, it forms 2 ATP molecules, and the more efficient shuttle system is the malate aspartate shuttle system, which is present in the liver and heart cells. Here 1 NADH2, it forms 3 molecules of ATP. So students, जो NADH2 formed हुए हैं in glycolysis, they can form either 2 ATP or they can form 3 ATP, depending upon कि उनकी entry जो है वो किस shuttle system से हो रही है. अगर उनकी entry glycerol phosphate shuttle से होती है, they will form 2 ATP. अगर उनकी entry जो है malate aspartate shuttle से हो रही है, so they will form what? 3 ATP. Now students, let us calculate how many ATP molecules they will be formed from the glucose oxidation. So glycolysis में students हमने देखा कि ATP की अगर हम बात करें तो ATP 2 जो हैं वो directly formed हुए, और NADH2 जो थे formed वो कितने बने glycolysis में students? 2. Now ये जो NADH2 formed हुए हैं, they can either form 2 into 2, that is 4 ATP. So, अगर हम यहाँ पे टोटल ATP लिखें, सो दे कैन फॉर्म आइदर 4 ATP अगर उनकी एंट्री जो है वो ग्लिसरोल फॉस्फेट शटल सिस्टम से हो रही है, या दे विल फॉर्म 2 into 3, दैट इज 6 ATP. मतलब 4 to 6 ATP फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम द NADH2 which is formed in the glycolysis, depending upon the 2 shuttle system. Now student, oxidative decarboxylation में there is no direct formation of ATP.
और NaDH2 कितना फॉर्म्ड हुआ, 2 फॉर्म्ड हुआ। एंड आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो NaDH2 फॉर्म्ड हुआ है इट विल फॉर्म 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो 2 कितने बनाएंगे, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये कंट्रीब्यूशन किसकी होगी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड स्टूडेंट आ जाओ क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP विच वर डायरेक्टली फॉर्म्ड। NaDH2 कितने फॉर्म्ड हुए थे स्टूडेंट, 6, और FADH2 कितने फॉर्म्ड हुए थे, 2 FADH2 फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। सो 2 FADH2 भी फॉर्म्ड हुए हैं। अब स्टूडेंट जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं NaDH2 के, दे विल फॉर्म हाउ मेनी ATP, 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18, प्लस ये जो 2 मॉलिक्यूल्स FADH2 के हैं दे विल फॉर्म हाउ मेनी ATP, दे विल फॉर्म 2 ATP, 1 FADH2 विल फॉर्म 2 ATP. So 2 will form how many ATP? 2 into 2, 4. That is equal to 22. So this is the 22 ATP. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर डायरेक्ट जो है अब काउंट करें कि क्रेब्स साइकिल की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म्ड हो रहे हैं बाय क्रेब्स साइकिल। 6 बने इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो 24 प्लस 6 कितने हो गए, 30, और 30 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ATP के डायरेक्ट फॉर्म हुए इन ग्लाइकोलिसिस दैट इज इक्वल टू 32, और 32 प्लस जो NaDH2 फॉर्म्ड हुए हैं इन ग्लाइकोलिसिस दे कैन आइदर फॉर्म 4 और दे कैन फॉर्म 6 ATP। तो 32 प्लस 4 हम करें 36, और 32 प्लस 6 करें तो 38। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 36 से लेके 38 मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म्ड करता है अपॉन इट्स ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्लियर हो जाएगा। सो ग्लाइकोलिसिस में देखो 2 मॉलिक्यूल्स ATP के डायरेक्ट फॉर्म हुए थे, 2 मॉलिक्यूल्स NaDH2 के बने, और ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है NaDH2 के दे कैन आइदर फॉर्म 4 ATP और दे कैन फॉर्म 6 ATP। तो 2 प्लस हम 4 एंड 6 करें तो कितने बने, 6 to 8 ATP मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, उसने 2 मॉलिक्यूल फॉर्म किए NaDH2 के। सो 2 विल फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ईच। सो टोटल कितने बने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे वर फॉर्म्ड बाय पायरुवेट ऑक्सीडेशन। और क्रेब्स साइकिल की कंट्रीब्यूशन कितनी है स्टूडेंट्स, 24 मॉलिक्यूल्स है ATP की। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अपॉन इट्स ऑक्सीडेशन दैट इज फॉर्मिंग total 36 to 38 molecules of ATP. So this is the respiration balance sheet. So 1 molecule of glucose that is oxidized in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water, plus 36 to 38 molecules of ATP. They are formed from 1 molecule of glucose upon its oxidation. So what is the significance of aerobic respiration? 1 glucose molecules, it produces 38 ATP molecules. Glucose molecule, it consists of 686 kilocalories of energy. एंड ऑफ दिस ओनली 277, मतलब अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें इन कैलोरीमीटर, जहाँ पे उसकी हम सारी एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 686 किलो कैलोरीज एनर्जी को रिलीज करता है। बट जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म किए, और एक मॉलिक्यूल जो है वो ATP का वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर हम 38 को 7.3 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी कैलोरीज रिलीज हुई, 277। मतलब एक्चुअली ग्लूकोज की जो रिलीज है एनर्जी का वो 686 है, बट ये ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने 277 कैलोरीज जो है एनर्जी रिलीज की। तो रेस्ट जो एनर्जी है, जो बाकी एनर्जी है 300 किलो कैलोरीज के करीब, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर हम एफिशिएंसी देखें रेस्पिरेशन का, तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 277 रिलीज हो रही है, 0.4 डिवाइडेड अपॉन टोटल कितनी रिलीज होनी थी, 686,
तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 40%. इट मीन्स जो एफिशिएंसी है एरोबिक रेस्पिरेशन की, दैट इज ओनली 40%, because the rest of the energy that is lost in the form of heat. So students, this was all about the topic respiration balance sheet. Now we will start the topic respiratory quotient. Respiratory quotient करने से पहले you all must be knowing what is aerobic respiration. So aerobic respiration is that which is taking place in the presence of oxygen. And anaerobic respiration is that which is taking place in the absence of atmospheric oxygen. Now, what are respiratory substrates? The respiratory substrates, they are the organic substances which are oxidized in cellular respiration to release energy. And there are number of respiratory substrates like carbohydrates, fats and proteins. Carbohydrates में example है glucose, fructose, starch, glycogen, sucrose. Fats में है fatty acids and glycerol. And proteins, they also act as respiratory substrate under starvation condition. So what is respiratory quotient? Respiratory quotient or RQ value क्या है student? This is the measure of the ratio of carbon dioxide produced and oxygen consumed. Now student, जब respiration हो रहा है, when it is taking place in the presence of oxygen, then it is consuming oxygen and it is giving off carbon dioxide. तो RQ का मतलब है the ratio between the volume of CO2 produced divided by the volume of oxygen consumed per unit time. तो अगर हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं between the volume of CO2 produced to the volume of oxygen consumed, then this is known as what? This is known as RQ. And respiratory quotient and RQ, it is a valuable measurement as it provides us with information regarding the nature of the substrate used by an organism for respiration. भी respiratory substrate क्या है? अगर हमें RQ की वैल्यू पता है, then we can determine what is the respiratory substrate. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखी हुई है ग्लूकोज की. सो हेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड in the presence of 6 molecules of oxygen to form 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecule of water. तो अगर हम इसकी RQ की वैल्यू निकालें ग्लूकोज की, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए? 6. कितने ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुए? 6. तो 6 को 6 से डिवाइड किया, वैल्यू कितनी आ गई RQ की? 1. इट मीन्स RQ की वैल्यू ग्लूकोज के लिए कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है. इट मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी RQ की वैल्यू क्या है? 1. सो RQ की वैल्यू से हमें यह पता लगा दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. सो ये टेबल स्टूडेंट्स दिखाया गया है एंड दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द वेरियस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो ग्लूकोज की RQ की वैल्यू 1 है, फैट्स की जो RQ की वैल्यू होती है दैट इज 0.7 और प्रोटीन्स की RQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 0.9 है. एंड इफ एनी डिग्री ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, तो RQ की वैल्यू जो है दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 1. सो RQ की वैल्यू इक्वल टू 1 है और लेस देन 1 है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. बट इफ द रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, the value of RQ that is always greater than 1 and it is also infinity. तो स्टूडेंट्स ये देखो दिखाया गया है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. सो इन कार्बोहाइड्रेट्स 6 molecules of carbon dioxide they are produced and 6 molecules of oxygen they are consumed. So the value of RQ that is equal to 1. For proteins the RQ वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.9. whereas for in case of fats the value of RQ that is equal to 0.7. For example students, ये palmitic जो acid है उसकी oxidation की equation जो है वो दिखाई गई है. So here 114 molecules of CO2 they are produced and 163 molecule of oxygen they are consumed. So अगर हम इसकी रेशियो निकालें, it comes out to be 0.7. So the value of RQ in case of fats that is equal to 0.7.
Now what is the value of RQ for organic acids? ये students equation दिखाई गई है malic acid की कि when the malic acid it is oxidized it forms 4 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of oxygen they are consumed. Now RQ of malic acid is equal to 4 divided by 3, so the value it comes out to be 1.33. It means for organic acids the value of RQ that is more than 1. For example, for malic acid, it is equal to 1.33. Now let us determine the value of RQ for anaerobic respiration. Now students, anaerobic respiration that is taking place in the absence of oxygen. So there is no oxygen consumed, but there is production of CO2. So the value of volume of CO2 produced that is equal to 2, but the volume of oxygen consumed that is equal to 0, and any number which is divided by 0 that is equal to infinity. So the value of RQ for anaerobic respiration that is equal to infinity. So students, what is the significance of this RQ value? कि RQ value से एक तो हमें पता चल रहा है what is the mode of, what is the type of respiration, whether the respiration it is taking place in the presence of oxygen or it is taking place in the absence of oxygen. Because if the value is 1 or it is less than 1, then it is aerobic respiration. And if the value of RQ it comes out to be infinity, then it is what? It is anaerobic respiration. And we also know by the value of RQ what is the respiratory substrate. For example, for carbohydrates the RQ value that is equal to 1. For proteins the value of RQ that is equal to 0.9, and for fats the value of RQ that is equal to 0.7. Now students, respiration, is respiration a catabolic pathway? No, respiration is having both catabolic and anabolic pathways. Therefore it is also known as amphibolic in nature. तो रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स कैटाबॉलिज्म तो हो रहा है, चीज़ें ब्रेक डाउन तो हो रही हैं, बट साइड बाय साइड रेस्पिरेशन के कई ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें कई ऐसे इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. सो रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक के साथ साथ एनाबॉलिक भी है इन द नेचर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने जो स्टडी किया है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज की स्टडी की. नाउ अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जो अमाइनो एसिड्स हैं दे फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, and this acetyl coenzyme A it enters into the Krebs cycle. So amino acids जो है they are also entering into the respiratory pathway. Similarly fatty acids जो है they also form acetyl coenzyme A and it enters into the Krebs cycle. So besides glucose, we all know that fats and proteins they are also acting as the respiratory pathway. So they are changing into some forms, and these forms they are entering into what? They are entering into the aerobic respiration, that is into the Krebs cycle. For example, glycerol जो है, that glycerol it will form glyceraldehyde 3-phosphate, and this glyceraldehyde 3-phosphate it will enter into the glycolysis. Amino acids कैसे enter कर रहे हैं into aerobic mode of respiration? They are forming acetyl coenzyme A. Fatty acids they are also forming acetyl coenzyme A, which is entering into the Krebs cycle. So here we are seeing that respiration is having a catabolic pathway. चीज़ें जो है यहाँ पे break down हो रही हैं. For example, glucose जो है वो break down हुआ into carbon dioxide and water. Now besides catabolism students, many anabolic pathways they are also associated with the respiration. For example student, Krebs cycle very important. Krebs cycle में कई ऐसे intermediates formed हुए जिन्होंने a number of biomolecules की formation में एक important role play किया. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये जो सिट्रेट है जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट था इन Krebs cycle, it helps in the formation of fatty acids and sterols. अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है विच वॉज फॉर्म्ड इन द Krebs cycle, it forms glutamic acid. This glutamic acid it helps in the formation of other amino acids by the process of transamination, which later on helps in the formation of purines and pyrimidines, which forms the nucleic acid.
Similarly, succinyl coenzyme A जो है, it helps in the formation of porphyrins, in heme, in the chlorophyll pigment. The oxaloacetate, it helps in the formation of aspartic acid, and this aspartic acid, it helps in the formation of other amino acids and purines and pyrimidines. So students, हमने study किया कि respiration जो है, it is having a catabolic pathway also, and it is also having a anabolic pathway also. Especially Krebs cycle जो है, इसमें कई ऐसे intermediates formed हो रहे हैं which are helping in the formation of a number of biomolecules like fatty acids, amino acids, sterols, purines, pyrimidines, porphyrins, chlorophyll pigments, etc. So we can say that respiration is a catabolic as well as having anabolic pathway. So it is amphibolic in nature. So in students, in the last, what is the significance of respiration? Respiration, it helps in the release of energy. It helps in the synthesis of ATP molecules. There is stepwise release of energy. It helps in the growth and development of the individuals. The energy which is released, it is helping in the biosynthesis of a number of biomolecules. There is a large role of intermediates which are formed in respiration, like Krebs cycle, a number of intermediates which are formed. They are helping in the formation of a number of biomolecules. In respiration, there is a balance between the CO2 gas and the oxygen gas. And fermentation, which is the respiration in the absence of oxygen, that is also helpful in the formation of a number of products like ethyl alcohol and lactic acid. So students, this was all about the topic respiration balance sheet, RQ and amphibolic pathway of respiration. So students, thank you to all.